और ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है? Any of the participants? Abdullah Abbasi, I can see your name over here. Somebody from Enigma is here. Majid is here. अगर आप में से कोई ये बताना पसंद करे, हसन मेहदी is here. जुबैर is here. आप में से क्या कोई ये बताना पसंद करेगा कि आपके ख्याल में एक ब्रांड और एक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? अस्सलाम वालेकुम। A product is anything that is in the market, but a brand is a company that a label that is on the product. I'm sorry, Abdullah, I can't hear you. A product is Can other anything. people hear, Abdullah? I'm really sorry, Abdullah, I can't hear you. लेकिन अगर आप chat पे लिख दें तो maybe I will be able to pick up your point and include that. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? Hello, can you hear me? अब्दुल्ला वासिम में भी ट्रेनर थोड़ा सा वो सुनने में इशू है, भी वो सॉल्व हो जाएगा। Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Hello,
Yes, just give me a moment. I'll be back with you. I'm joining from 2 devices so that I can share my slides and my voice can also carry. Okay, okay, no issue. No issue. All right, now I hope my all right, now I hope my slides are visible, my voice is audible, and you can all see me. Is that right? Yeah, yeah. All right. So Abdullah, I had seen your message on the chat, and you're absolutely right. मैं आपको ये बता रही थी कि अगर किसी प्रोडक्ट का आपने नाम नहीं दिया तो उसकी पहचान नहीं बन सकती. तो ब्रांडिंग जो है वो प्रोडक्ट की पहचान बन जाती है और वो हेल्प करती है प्रोडक्ट को किसी स्पेसिफिक नाम के साथ, किसी स्पेसिफिक कंपनी के साथ एसोसिएट करने में. जब हम लोग मार्केटिंग पढ़ा करते थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो हमें हमारे टीचर्स मिसाल देते थे प्रोडक्ट्स के जो अननेम्ड होते थे, जिनकी पहचान किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं होती थी. उसमें कहते थे कि ये जो ड्राई ग्रोसरीज हैं जिसमें आटा, दाल, चावल हो गया, ये जो है ये आपके प्रोडक्ट्स हैं. बट if you talk about Lux, if you talk about Dove, if you talk about Capri, if you talk about Honda, if you talk about Suzuki, these are the brands. But things have changed so much that even if you now go to Imtiaz Superstore, you would see that even the atta is branded, even the pulses जो आपकी दालें आती हैं वो भी आपको ब्रांडेड नजर आती हैं, जो आपके घर में चीनी आती है या जो नमक आता है वो भी ब्रांडेड नजर आता है. यानी उन प्रोडक्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के नाम के साथ, किसी पर्टिकुलर मार्केटर के नाम के साथ. ठीक है. तो what changes a product into a brand is the identification which links that particular product to a particular manufacturer or marketer. So when we are talking about unnamed products, we usually use the word product or service. But when we are using a particular name, which is called a brand name, then we are talking not about the product themselves, but about specific brands which are within that product category. All right. Now, as I told you in the very beginning कि marketing में जो सबसे अहम चीज आपको समझने की जरूरत होती है वो marketing mix होता है. ठीक है. marketing mix का दूसरा नाम जो है वो marketing effort होता है या marketing program होता है. ठीक है. marketing mix, marketing effort, marketing 4Ps, these are the names, different names of the same concept. 4Ps यानी वो कौन से 4 मेन एलिमेंट्स हैं जिनके नाम अल्फाबेट P से शुरू होते हैं, जो आपकी एंटायर मार्केटिंग की जो डोमेन है उसको कैप्चर कर रहे होते हैं. तो नंबर 1, द फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट इटसेल्फ, यानी आप मार्केट में क्या चीज लेकर आ रहे हैं. द सेकंड P स्टैंड्स फॉर द प्राइस, यानी आप वो प्रोडक्ट किस कीमत पर मार्केट में लेकर आ रहे हैं. The third P stands for place, यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी लॉजिस्टिक्स, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए एक कन्वीनियंट जगह पर अवेलेबल हो. एंड लास्टली कम्स द प्रमोशन, which means how are you communicating to your targeted customer that this is the product that you have created for them and this is the product which is priced at such a level and it is available at such and such place. तो जब भी आप मार्केटिंग का सोचते हैं तो आपको इन 4 मेन एरियाज में डिसीजंस करनी पड़ती हैं. इन 4 मेन एरियाज में आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप योर प्रोडक्ट,
how are you going to price your product, how are you going to bring it to a place where customers can buy it, and how are you going to tell them what you have produced and what you have priced. अच्छा, ये जो 4 elements हैं, product, price, place, promotion, ये 4 ऐसे controllable लीवर्स हैं जो मार्केटर अपने हाथ में रखता है, और इनको रिफाइन करके वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को मैनेज कर रहा होता है. मार्केटर्स के ऊपर अक्सर एक इल्जाम होता है कि दे क्रिएट नीड्स, राइट? बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट इज नॉट the needs that are created by the marketers. Marketers create demand and they are responsible for managing the demand. So how do they manage demand? By matching their product with what the customer requires. ठीक है, मिसाल के तौर पर कल ही मैं देख रही थी YouTube पे एक वीडियो थी कि पाकिस्तान में एक सस्ता चूल्हा बना है जो चलने के लिए ना गैस इस्तेमाल करता है ना बिजली से चलता है, बल्कि वो पायलट से चलता है. पायलट का मतलब ये था, उन्होंने जब मैंने वीडियो 10 मिनट की देखी तो मुझे पता चला कि ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है इसके छोटे छोटे पैलेट्स बनाते हैं, ये उसको ईंधन के तौर पे उन चूल्हों में इस्तेमाल करते हैं. इट इज कंप्लीटली सेफ, सो मच सो दैट इवन इफ द स्टोव इज बर्निंग फॉर 1 आवर तो उसकी जो आउटर केसिंग होती है स्टोव की वो गर्म नहीं होती है. एंड 35 रुपीज पर केजी में वो फ्यूल आपको एक दिन का खाना जो है वो एक नॉर्मल फैमिली के लिए हाउस होल्ड कुकिंग में आपको बना के दे सकता है. और यही चीज जो है ये कमर्शियल यूज के लिए भी अवेलेबल है. तो दिस वाज अ प्रोडक्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय अस. क्यों? इसलिए कि फ्यूल प्राइसेस बहुत महंगी हो गई हैं, सीएनजी अवेलेबल नहीं है, और नेचुरल गैस की भी अब लोड शेडिंग. I am addressing you from the city of Karachi. तो अब कराची जैसी सिटी में भी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है. पंजाब में तो you people are very, I mean, you have experienced this for a long time, especially in the winter months. लेकिन कराची जहाँ का टेम्परेचर माइल्ड होता है, सर्दियाँ इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती, यहाँ पे भी अब गैस की लोड शेडिंग हो गई है. तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप बिजली के चूल्हे ले लें. बिजली चूंकि महंगी हो गई है, अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज नो मोर feasible. So when this innovator saw that the market requires a cheap solution, more economical solution, it came up with the idea to develop the stove which is neither running on gas nor it is running on electricity. यानी एक सस्ता चूल्हा बनाया जो ना बिजली से चलता है ना गैस से चलता है, और वो लोगों की जरूरत जो है वो पूरी करने की सलाहियत रखता है. ठीक है, तो चूंकि लोगों की जरूरत थी किसी सस्ते ईंधन वाले चूल्हे की, so this marketer came up with such a product. Right? Now then we see what would be the price. अगर यही प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं, इसकी प्राइस क्या होगी? ठीक है, अगर आप एक चूल्हा खरीदने जाएं, पिछले साल की बात है कि आई बॉट स्टोव व्हिच वाज रनिंग ऑन एलपीजी. तो एलपीजी और पूरा स्टोव और उसकी पूरी क्या कहना चाहिए उसको सेटअप करने में आई थिंक इट कॉस्टेड अराउंड 5,000 rupees or so. Right now, when this ये जो सस्ते चूल्हे की मैं आपको बात बता रही हूँ, when it was compared with these options, this option came out to be more economical. Right? तो प्रोडक्ट भी कस्टमर की नीड को सामने रख के बनाया गया, प्राइसिंग भी उसकी ऐसी की गई कि कस्टमर को अपनी जेब पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस ना हो, और न सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चूल्हे को खरीदने की होगी वो भी कम थी, बल्कि उस चूल्हे को इस्तेमाल करने के लिए जो ईंधन चाहिए वो भी आपकी बिजली से और क्या कहना चाहिए एलपीजी सिलेंडर से सस्ता पड़ता है. ठीक है, फिर हमने देखा कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है. प्रोडक्ट तो ये पंजाब में मिल रहा है. इज इट अवेलेबल इन कराची? इज इट अवेलेबल इन गिलगित बल्तिस्तान? इज इट अवेलेबल इन बलूचिस्तान? तो उस 10 मिनट की वीडियो में ये बताया गया था कि बेशक प्रोडक्ट पंजाब में मिल रहा है, बट दे हैव अरेंज्ड देयर लॉजिस्टिक्स फॉर डोर स्टेप डिलीवरी टू प्लेसेस लाइक कराची, लाइक खैबर पख्तूनख्वा, लाइक गिलगित बल्तिस्तान. सो इट मीन्स दैट दे आर गियर्ड अप. उन्होंने अपने आप को इस तरह से मार्केट में लेकर आए हैं कि अगर उनका पोटेंशियल कस्टमर पंजाब के में नहीं है बल्कि किसी और दूर दराज इलाके से विद इन पाकिस्तान
ताल्लुक रखता है तो they should be able to provide that product at their doorstep. ठीक है. फिर हमने देखा कि इसकी प्रमोशन कैसे हो रही है. तो प्रमोशन वो किस पे कर रहे हैं, YouTube पे कर रहे हैं. और YouTube is the new, you can say, media which is being watched by a very large number of audience. TV लोग इतना नहीं देखते जितना YouTube देखते हैं. और उसकी वजह यही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इतनी एम्पावरमेंट दे दी है मार्केटर्स को भी और कस्टमर्स को भी कि कस्टमर्स जो देखना चाहते हैं वो अपनी स्क्रीन पे सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड व्हाइल दे आर डूइंग सो वो हर जगह अपने वेब प्रिंट्स छोड़ रहे हैं. यानी कहीं ना कहीं उनका डेटा रिकॉर्ड हो रहा है कि उन्होंने कौन सी साइट विजिट की, किस साइट पे उन्होंने कितना टाइम विजिट किया, किस साइट से उन्होंने परचेजेस किए. All this data is being captured and stored somewhere. और इस डेटा को मार्केटर्स यूज करते हैं अपनी मार्केटिंग को मजीद रिफाइन करने के लिए, अपनी मार्केटिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए. अगर आप अपने फोन, अगर आप फोन यूज भी नहीं कर रहे, ठीक है, एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, जब आप अपना फोन खोलेंगे आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज ऐसा मिलेगा जो आपके इंटरेस्ट का होगा, जो उन चीजों के बारे में होगा जिसका आपने अपनी गुफ्तगू में तस्करा किया होगा, irrespective of the fact कि आप उस वक्त फोन पर बातचीत नहीं कर रहे थे. Your phones are equipped with so many sensors which you don't know, but they are catching this information and marketers are using it to the best benefit that they can put to use. ठीक है, इसके लिए बात बराए बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जहां जहां सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं आपको डेटा शेयरिंग में, तो वहां पे आप कुकीज को डिसेबल कर सकते हैं ताकि आपको आपकी वेब ट्रैकिंग ना हो सके, कोई ये रिकॉर्ड ना रख सके कि आपने किन वेबसाइट पे विजिट किया है या किन प्रोडक्ट्स की आपने परचेजिंग की है या किन की आपने विंडो शॉपिंग की है वेब साइट्स के जरिए. सो इट इज इन योर हैंड्स. Not all, it's not necessary you accept all the cookies. You can set your own options in the privacy policy for different websites so that you are comfortable to share only that data which you want to share, and you are not at you are not exposed to some inherent risk which goes with the usage of digital screens. All right. Now moving forward from here, I hope this marketing mix is clear to all of you. हम marketing mix देखते हैं Rolex का. All right. Right. The marketing mix of Rolex. ठीक है, Rolex आपको रोलेक्स के नाम से जैसे आपको पता होगा कि this is a luxury watch. It's a Swiss company which is making this watch, and it's a high-end brand, right? Now, when I talk about high-end, it means that we are not talking about ordinary watches, but it is a premium brand, and we have certain we can differentiate it from the casual wear watches from Rolex based on an analysis of its marketing mix. Now let's see what is happening when we talk about the marketing mix of Rolex. So marketing mix aapko jaise yaad hai ki we have the product, the price, the place, and the promotion. So when we are talking about the product itself, we have the Rolex in our minds, right? Now, Rolex is something which is known for its precision, right? यानी जितनी precise timekeeping Rolex की घड़ी करती है, उतनी precise timekeeping कोई और watchmaker claim नहीं कर सकता है. So it is known for its precision. Next, it is known for its durability. I'm forgetting the name of the female swimmer who crossed the English Channel. लेकिन before crossing the English Channel, Rolex
कंपनी ने उनको एक अपनी सब ब्रांड पहनने के लिए दी और उन्होंने कहा कि आप ये पहनकर इंग्लिश चैनल को स्विम करके उबूर करें. So when that swimmer she travels this English channel, तो रोलेक्स ने उसका अब जो घड़ी उनको एज अ टेस्ट प्रोडक्ट पहनाई थी, उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक की, उसकी प्रिसिजन चेक की, एंड दे वर really pleased to know कि जो उनका क्लेम था कि उन्होंने एक waterproof घड़ी भी बना ली है, that proof that claim held valid. So after this they started marketing it. उन्होंने उस ब्रांड का नाम दिया, ऑयस्टर नाम था उस ब्रांड का, कि they are marketing Rolex as a sub brand of Rolex as a waterproof watch which can perform equally well even if it remains submerged in the water for more than 8 hours. All right. Moving forward from here, all right. Moving forward from here, now if you, moving forward from the product, I was discussing with you the place, right? How is, sorry, my slide is not coordinated. I hope you can see the segmentations, the product price place promotion slide on your screens. Yes. Here we go. All right. So since it's a premium brand, it gives what is the product designed for. आपको एक outward expression देता है exclusiveness का. We demonstrate who we are with the help of the brands, with the help of the products that we use, right? So since this is a premium brand, it has been designed in such a way that only a small segment of the entire population can afford it. So it becomes a symbol of success. ठीक है? ये आपकी इस मादी दुनिया में जो भी आपने अचीव किया है, जो भी अभी तक आपने इस अपने स्टेटस में अक्वायर किया है, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन बनकर मार्केट में सामने आता है. So when we talk about the product itself, it is very exclusive, right? Now since this is an exclusive product, तो इसको available भी बहुत exclusive जगहों पे होना चाहिए. जितना exclusive product होगा, उतनी exclusive इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उतनी एक्सक्लूसिव इसकी चैनल मैनेजमेंट को केटर किया जाएगा. लिहाजा यू विल सी कि बहुत कम स्टोर्स हैं जहां पर रोलेक्स अवेलेबल होती है. स्पेशलाइज्ड स्टोर्स हैं जहां से आप रोलेक्स खरीद सकते हैं. जहां पे वो स्टोर्स लोकेटेड हैं, वो आपको शहर के पॉश तरीन इलाकों में उनके आउटलेट, उसका आउटलेट नजर आएगा. ठीक है? और रोलेक्स वो ब्रांड है जिसकी वेबसाइट तो है, लेकिन उसने ऑनलाइन सेलिंग नहीं की है ताकि उसकी एक्सक्लूसिवनेस बरकरार रहे. नाउ if you know the product, you will be able to realize कि ये जो इसकी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी है, ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, वो इसके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रही है. यानी द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एंड द प्राइसिंग स्ट्रेटजी आर सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर. दे जेल इन टुगेदर, दे फिट इन टू ईच अदर. जितना एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, उतनी ही एक्सक्लूसिवली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन किया गया है. Then we come to the price. Product premium, so zahir it will not be coming at a cheap price, so you have to pay a fortune to purchase Rolex, right? It does not offer any discounts, it does not offer any price reductions, and it does not offer seasonal sales like Christmas pe sale lag gayi, ya Eid pe sale lag gayi, ya Ramzan mein sale lag gayi, ya Black Friday pe sale lag gayi. No, the price remains premium throughout the
year, you will not find any discounts, any reductions in the price of a Rolex, right? Why? Because this pricing strategy also supports the product concept. जितना premium product है, जितना exclusive product है, उतना महंगा होगा. अगर रोलेक्स सस्ती मिलने लगे, nobody will purchase it, क्योंकि रोलेक्स का कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में यही है कि इट इज अ प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट. अगर रोलेक्स की प्राइस रिड्यूस कर दी जाए, उसकी मार्केट बढ़ेगी नहीं, बल्कि उसकी मार्केट जो है वो वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. क्यों? इसलिए कि लोगों के जहनों में ये तस्वीर बैठा हुआ है कि द मोर exclusive, the more premium, the more luxurious a product is, the more price it commands. ठीक है? तो हमने देखा कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी भी मैच कर रही है और उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी मैच कर रही है. अब हम आते हैं आखिरी एलिमेंट पे, विच इज द प्रमोशन. रोलेक्स अपने आप को एडवर्टाइज कैसे करता है? रोलेक्स अपने कस्टमर्स को अपने बारे में इंफॉर्मेशन किस तरह से देता है? तो अब आप देखिए कि आजकल जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का जोर है, जहाँ पे हर चीज बिल्कुल डिजिटल स्क्रीन पे कस्टमाइज होकर मिल गई है, रोलेक्स अभी भी मास मार्केटिंग नहीं करता. ठीक है? रोलेक्स का बड़ा एक क्या कहना चाहिए, शॉर्ट promotional strategy है. It gives print ads in high-end upmarket publications and magazines. यानी आपको इसका जो प्रिंट एड है वो आपको वोग में मिलेगा, हाई एंड मैगजीन्स में मिलेगा. और जो स्पॉन्सरशिप्स आप देखेंगे, जो स्पोर्ट्स ये स्पॉन्सर करेगा वो भी अप स्केल हाई एंड स्पोर्ट्स होंगे. यानी वो कभी क्रिकेट को स्पॉन्सर नहीं करेगा, बल्कि रोलेक्स अगर स्पॉन्सर करेगा तो या तो गोल्फ को करेगा, ठीक है, या फिर वो यॉचिंग करेगा. इस तरह से हाई एंड, जो कि जिसको कहना चाहिए कि एक इलीट जेंट्री जिन स्पोर्ट्स को परस्यू करती है, रोलेक्स उन्हीं की मीडिया हैबिट्स को देखते हुए अपनी प्रमोशनल कैंपेन उन जगहों पे चलाता है जहां पे उसकी टारगेट मार्केट को उसका मैसेज नजर भी आए और वो उसको परसीव करें, उसको अपने माइंड में एब्सॉर्ब करें. So this example of Rolex demonstrates that once you have decided what you are going to bring into the market, you have developed your whole product concept around it, then you will have to design your placement and your pricing and your promotion strategy in such a manner that all augment each other. These 4 P's have to support each other. इन चारों P's के दरमियान एक alignment होनी चाहिए. अगर alignment नहीं होगी तो आपकी marketing strategy fail हो जाएगी, क्योंकि product concept कुछ idea दे रहा होगा, placement स्ट्रेटजी कुछ आइडिया दे रही होगी, प्राइसिंग उससे बिल्कुल रिवर्स जा रही होगी, प्रमोशन बिल्कुल टेंजेंट पे होगा. योर होल effort of designing a marketing strategy is going to fail. So it means that all these 4 P's have to be united together, they have to be synchronized, they have to be aligned with the core product concept. ठीक है? मैंने आई थिंक काफी डिटेल में मार्केटिंग मिक्स का एग्जांपल दिया है. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मार्केटिंग मिक्स पे या अलाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, डू लेट मी नो नाउ, वरना फिर हम आगे सेगमेंटेशन की तरफ मूव करेंगे. एनी क्वेश्चंस? Hassan, you have a question? नो मैम, नो एनी क्वेश्चन. बड़े अच्छी तरीके से आप समझा रही हैं, तो आप कैरी ऑन कर सकती हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच. All right, thank you so much. All right, now we are moving on to the next part of marketing, which is equally important, and that is the market segmentation, targeting, and positioning. Okay. Whenever we have a look at a market, we should instantly realize that it is made up of different people, and different people have different needs, right?
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने मार्केट को साइकोलॉजिकली भी अंडरस्टैंड करना है। साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि आप ये देखिए, अगर हम घड़ी की मिसाल लें, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि घड़ी का जो कस्टमर है उसकी नीड्स क्या है। क्या उसकी नीड ये है कि उसने अपनी रिस्ट वॉच में से सिर्फ वक्त देखना है, या उसकी ये नीड है कि वो वॉच जो उसने पहनी हुई है वो उसके स्टेटस सिंबल को रिफ्लेक्ट करे, या वो उसकी सक्सेस इन लाइफ को रिफ्लेक्ट करे, या वो अगर एक्टिव लाइफस्टाइल लिव करता है तो क्या वो इतनी ड्यूरेबल होनी चाहिए कि वाइल एक्सरसाइजिंग, वाइल जॉगिंग, वाइल बीइंग एट द जिम पसीना जो आता है वो रिस्ट वॉच को खराब ना करे। व्हाट आर द डिफरेंट नीड्स? यू हैव टू think from the perspective of the customer in order to identify what are the different needs which are existing in this larger market. अब हमने ये देखा कि मार्केट जो है उसमें इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, अगर हम कस्टमर कंज्यूमर मार्केट्स की बात करें। मार्केट्स में बिजनेसेस हो सकते हैं, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बिजनेसेस परचेज करते हो आपसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो कंज्यूमर मार्केट्स की भी होनी चाहिए, और मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो बिजनेस मार्केट्स की भी होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं consumer markets के। We have a large population. Let's suppose we have a population of 1,000 people, right? और हमने ये देखा कि उनकी एक कॉमन नीड जो है वो ये है कि they require footwear, उनको जूता चाहिए। ठीक है, now of all the 1,000 people who require shoe, we cannot make just one type of shoe for those 1,000 people. ठीक है, हमारी अकल ये कहती है कि उन 1,000 लोगों में कुछ बच्चे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको फुट प्रॉब्लम्स होंगी, मिसाल के तौर पे आर्थराइटिस जैसी कंडीशन होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा और उनको ऐसे शूज चाहिए होंगे जो उनके नीज को और उनके एंकल्स को सपोर्ट करें, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फॉर्मल वेयर के लिए जूते चाहिए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कैजुअल वेयर के लिए जूते चाहिए होंगे। सिमिलरली जो एक्टिव लाइफस्टाइल परस्यू करते हैं उनको या तो जॉगिंग शूज चाहिए होंगे या वॉकिंग शूज चाहिए होंगे। फिर जो स्पोर्ट्स में है उनको फॉर एग्जांपल टेनिस शूज चाहिए होंगे या फुटबॉल शूज चाहिए होंगे। सो इवन इफ वी हैव अ वेरी लार्ज ओवरऑल मार्केट of customers who need shoes, if we study those customers in detail, we would come to the conclusion that not every one of that who is a part of that market has one common need. ठीक है, जो लोग स्पोर्ट्स वेयर की तरफ हैं उनकी अलग नीड्स हैं। ठीक है, जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के रियूमेटिज्म के पेशेंट्स हैं उनकी अलग नीड्स हैं। जो बच्चे हैं उनका साइज डिफरेंट है, जो फीमेल्स हैं उनको डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए, जो मेल्स हैं उनको डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए, डिफरेंट ओकेजन्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ शूज हैं। सो दिस लार्ज मार्केट can be broken down into smaller groups, and each group will be consisting of those people who have one common need. दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक बड़ी मार्केट है जिसमें सब लोग जो हैं उनकी जरूरत जूते की है, लेकिन चूंकि उनके जूते की जरूरत मजीद रिफाइन हो सकती है इस बुनियाद पे कि उनको जूता किस ओकेजन के लिए चाहिए। ठीक है, किस उम्र के फर्द के लिए जूता चाहिए, किस पर्पस के लिए जूता चाहिए। तो हम इन तीनों चीजों को भी अगर सिर्फ मद्देनजर रखें तो हमें पता ये चलेगा कि इस लार्ज मार्केट के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स मौजूद हैं जिनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट तो जूते की है, लेकिन किस तरह का जूता चाहिए वो उनकी स्पेसिफिक नीड पर डिपेंड करता है। So the first step in dividing the market into smaller groups is to identify what are the different needs which exist amongst the customers. Okay? Using those needs, you divide the entire market into smaller groups. Each group is called a segment.
ठीक है, और हर सेगमेंट के अंदर आप उन लोगों को प्लेस करते हैं जिनकी आपस में नीड्स सिमिलर होती हैं। यानी अगर हम शू मार्केट को इस तरह से डिवाइड करें कि फॉर्मल शूज फॉर फीमेल, formal shoes for males, then office wear for females and office wear for males, and then we have sports wear for females and sports wear for males. तो हमारे पास अच्छे खासे segments बन गए। अब जो females फॉर्मल वेयर सेगमेंट है उसमें सिर्फ फीमेल कस्टमर्स होंगी जिनकी कॉमन रिक्वायरमेंट ये है कि उनको किसी फॉर्मल ओकेजन के लिए जूता चाहिए, ठीक है। ये सेगमेंट उस ग्रुप से डिफरेंट होगा जिसके अंदर सारे मेल्स हैं और उनको भी फॉर्मल ओकेजन के लिए जूता चाहिए। ये दोनों ग्रुप्स उस सेगमेंट से डिफरेंट होंगे जो मिसाल के तौर पर फीमेल्स हैं और उनको कैजुअल वेयर के लिए जूता चाहिए। सो दिस एग्जांपल आई होप क्लेरिफाइज व्हाट डू वी मीन बाय सेगमेंट एंड हाउ आर सेगमेंट्स क्रिएटेड इन अ लार्जर मार्केट। तो याद रखने की बात यह है कि सेगमेंट, एक सेगमेंट के अंदर जितने कस्टमर्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स सिमिलर होंगी एक दूसरे से, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट्स में बिलोंग करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी उन लोगों से जो दूसरे सेगमेंट्स को बिलोंग करेंगे, which means that the requirements or the needs are similar within the group, but these needs and requirements are different across the groups, right? So as a marketer, you have to identify into how many segments you can divide your entire target market, ठीक है। जब आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपने इस सेगमेंट में से किस सेगमेंट के लिए मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना है। मार्केटिंग मिक्स क्या था? योर प्रोडक्ट, योर प्राइस, योर प्लेस एंड योर प्रमोशन। तो अगर आपने टारगेट किया है फीमेल फॉर्मल वेयर शू मार्केट को, तो आपका प्रोडक्ट वही होगा जो फीमेल फॉर्मल वेयर के कस्टमर्स को अपील करेगा, प्राइस भी आप वैसे ही रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप वैसे ही रखेंगे और प्रमोशन भी आप वैसे ही करेंगे। सो आई होप दैट सेगमेंटेशन and targeting is clear. Segmentation means you are dividing the market into smaller groups, and what are you dividing the market on? You are dividing it on the basis of the needs of the customers, right? Target means that segment for which you want to develop your product, price, place and promotion, ठीक है। Alright. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है पोजिशनिंग की। पोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि जाहिर है कि व्हेन यू एंटर अ मार्केट देयर आर सो मेनी डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, सो मेनी डिफरेंट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। उस सारे कंपटीशन के दरमियान आपका प्रोडक्ट किस तरह से स्टैंड आउट करता है मार्केट में, दिस इज व्हाट वी मीन बाय पोजिशनिंग। तो अगर हम जूतों की बात करें तो जो हमारे जहन में नाम आते हैं मशहूर ब्रांड्स के, बाटा आ गया, एंड्योर आ गया, हश पपीज आ गया, ठीक है, इसके अलावा एडिडास आ गया, स्केचर्स आ गया। नाउ as I am taking these names, you would be able to recognize them and you would be able to realize what is the relative positioning of the product of the brand in the market. Yani Bata is a shoe for the masses. Okay, more, it's giving you value for money, acceptable quality at a reasonable price, right? But if I talk about Skechers, then it is one of the expensive shoes. It is giving you more comfort, but obviously that is coming at a higher price also. तो वो क्या associations हैं, वो क्या perceptions हैं, वो क्या images हैं जो आपके product के साथ consumer attach करता है, that is called positioning. You might want to position your product as a high end product, ठीक है। Is it the same position which is in the mind of the customers? क्या वो भी आपके product को high end product लेते हैं?
रोलेक्स अपने आप को पोजीशन करता है प्रीमियम रिस्ट वॉच ब्रांड, कंज्यूमर्स भी उसको परसीव करते हैं एज अ प्रीमियम हाई एंड up class luxury watch. So there is a synchronization between how Rolex wanted to position itself and how the customers are perceiving Rolex. All right. So okay, this is a slide which I have taken from Salman Zahir's book, The Basic Marketing. And this book was published in 2021, a very interesting read, especially for those who want to get a very preliminary know-how about what marketing is. ठीक है, जब हम segmentation और targeting की बात करते हैं, अगर हम एक market में groups आइडेंटिफाई नहीं करते, इसका मतलब ये है कि एंटायर मार्केट की एक कॉमन नीड है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, तो हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं. वी आर प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट फॉर एवरीवन हु इज इन द मार्केट, राइट. लेकिन अगर हमने मार्केट को छोटे ग्रुप्स में यानी सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है और उसमें से हम एक से ज्यादा सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन वाले प्रोग्राम पे काम करें, इसका मतलब है कि फॉर ईच सेगमेंट वी आर ब्रिंगिंग अ डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स इनटू द मार्केट. बाटा की मिसाल ले लीजिए, कैजुअल वेयर के लिए उसके पास अलग तरह के जूते होंगे, स्कूल शूज उसके पास अलग तरह के होंगे, इसी तरह जो उसके जॉगर्स होते हैं वो अलग मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं. यानी 3 डिफरेंट सेगमेंट्स को भी अगर बाटा जैसी कंपनी टारगेट कर रहा है तो इट इज डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स टारगेटेड फॉर ईच डिफरेंट सेगमेंट. ठीक है, अगर आप उस एंटायर मार्केट में से सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद सिर्फ एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि आपने अपने मार्केटिंग एफर्ट को कॉन्सेंट्रेट कर दिया है उस एक सेगमेंट के ऊपर, और यहीं से उसका नाम आता है concentrated marketing, which is also known as niche marketing, right? And then we have another very classic concept of marketing, which is customized or micro targeting, कि आप अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर को यूनिक कस्टमर तस्वर करते हैं और हर कस्टमर के लिए आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वेरी कर रहा होता है. इसकी एक बहुत आसान और बहुत ही जिससे आप रिलेट कर सकेंगे उसकी अगर मैं मिसाल दूं तो वो होते हैं आपके टेलर मास्टर्स, राइट. जब भी आपको कोई ड्रेस सिलवाना होता है, कोई सूट सिलवाना होता है, तो दैट इज टेलर मेड. ये जो लफ्ज टेलर मेड आया है ना, वहीं से यहाँ से मार्केटिंग ने इस लफ्ज को पिक किया है. एंड व्हेन यू आर डूइंग अ वेरी कस्टमाइज्ड टारगेटिंग, इट इज कॉल्ड टेलर मेड मार्केटिंग, टेलर मेड मार्केटिंग प्रोग्राम. यानी आप अगर आप टेलर के पास जाएंगे तो कैसा ड्रेस आपको चाहिए, किस कपड़े को आपको सिलवाना है, किस स्टाइल में सिलवाना है, किस डिजाइन में सिलवाना है, किस साइज में सिलवाना है, एंड प्राइस आप नेगोशिएट करेंगे. ऑल दिस मीन्स दैट फॉर ईच टेलर each individual customer is unique, and so that tailor will be creating a unique tailor-made dress for you. So when you apply this concept into marketing, it translates into customized or micro marketing, where you are developing a different marketing mix for each individual customer that you want to cater. I hope these points are clear to you. Yeah, ma'am, all is clear. Okay, so this I will very briefly show you this slide, which is the positioning map. It resides inside the mind of the customer. And on one vertical axis, for example, you have the price, and on the horizontal axis, you may have the benefits. For example, in this slide, which is again taken from Salman Zahir's book, Basic Marketing, it is showing you the different positions which automobile brands are occupying. So if you move up, the price is high, and the highest price is for Porsche, but the engine capacity is less than that of
Toyota Land Cruiser. And if you think about Audi, the engine capacity is low, but so is the price. If you move down, you would find that Toyota is low in price and medium in engine quality. So you are able to place different brands on this positioning map to realize what is the perception about the brand in the minds of the marketeers that you are targeting to. Moving forward from here, now we come to the second part of our today's session, which is on branding. Let me see if my slide is there for you. All right, now here it is. All right, so once we have had an overview of what marketing is, now we are moving on specifically to brands. And one thing that I'd like to remind you over here is that when we are talking about differentiated marketing or concentrated marketing or tailor-made marketing, we are now in the domain of brands. यानी product में हम जब तक डील कर रहे होते हैं जब तक हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया मार्केट को और उसमें से किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ सेगमेंट्स को हमने टारगेट करना चाहा, तो वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम अ प्रोडक्ट एंड मूव इनटू ब्रांडिंग. क्यों? इसलिए कि जैसे वो लोग जो शुरू से सेशन में साथ हैं उनके लिए मैं रिमाइंड करा दूं, और जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि branding is giving an identification to your product, right? Branding के जरिए आप अपने product की पहचान करवा रहे होते हैं amongst all the other substitutes and alternatives which are available in the market, which means that if you have to purchase a toothpaste, right, then you can have multiple options at your hand depending upon what is the purpose of toothpaste you want to achieve. अगर आपको for example cavity protection चाहिए, आप कोई और toothpaste की brand इस्तेमाल करेंगे. अगर आपको कोई दांतों में sensitivity है तो आप किसी और brand को prefer करेंगे, right? So it means that we are now moving from undifferentiated domain into a differentiated into a segmented domain. तो अगर हम अब्दुल्ला ने पहले हमें जवाब दिया था what is the difference between product and brand, and I would like to recall it over here कि product when it is named it converts into a brand, but it is not just the name behind branding, right? अगर आपको ये मेरी स्लाइड पर देखें तो branding is used for identification and differentiating a product from its competitors, right? तो वो पहचान हम कैसे create करते हैं, differentiation हम कैसे create करते हैं? First of all, we assign a name to the brand, ठीक है? फिर हम कोई logo या कोई टैगलाइन या कोई सिंबल एसोसिएट कर देते हैं अपनी ब्रांड के साथ, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ अगर मैं मैकडॉनल्ड्स का नाम लेती हूँ तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गोल्डन आर्चेस, right? The golden M, the golden arches represents McDonald's brand. This is the symbol which identifies and differentiates McDonald's from others like Pizza Hut and so on. ठीक है? इसी तरह आप यहाँ पे Hyundai का logo देख रहे हैं. That logo, that font, it differentiates Hyundai from Toyota, right? Similarly, आपको नीचे Aspire का logo नजर आ रहा है. अगर आप किसी और मिसाल के तौर पर स्कूल ऑफ लीडरशिप का लोगो देखेंगे और
देखेंगे you will be able to differentiate that these are, और Procter and Gamble का अगर आप logo देखेंगे you will be able to identify and differentiate between the two, right? So what are the branding elements? The name of the brand, the sign, the logo, the colors, so on and so forth. Okay, moving on to the next slide. Okay, so what is branding? What are we going to learn in branding? A brief overview of the meaning of the brand, a brief overview of the branding strategy. So, yes, let me change my slide again. So now the slide that is visible to you is the branding elements. And as I said, it is the name, the term, the symbol, anything which helps in creating an identity of a particular product and is able to relate it to a particular manufacturer, all that under the brand elements. Okay, so now I'm going to show you the example of logos, taglines, colors, and fonts. As you can see on your screen, it's a very well recognized logo that I'm showing you, and very well recognized tagline that I'm showing you, right? This red swoosh, the red tick mark is the logo. Nike का logo मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? Just do it, Nike की tagline है. Wherever you see this red swoosh or wherever you read just do it, आपका mind foreign recognize करता है कि ये Nike की brand की बात हो रही है, ठीक है? तो logo is the symbol which is attached to identify a brand. Tagline is a combination of words which show कि आपकी brand की personality किस तरह की है. इसी तरह से कलर्स और फॉन्ट्स जो हैं वो आपकी ब्रांड को आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. लोगों ने ट्रेडिशनली व्हाइट यूज किया है, रेड यूज किया है. व्हाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पैशन, द एनर्जी व्हिच गोज विद द ब्रांड पर्सनालिटी ऑफ नाइकी. एंड सिमिलरली जो फॉन्ट इसने इस्तेमाल किया है वो भी यूनिक है. अच्छा, ये बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई ब्रांड एलिमेंट क्रिएट करते हैं, आपने ब्रांड यानी नाम, लोगो, टैगलाइन, कलर, फॉन्ट, तो यू हैव टू गेट इट कॉपीराइटेड ताकि कोई कंपेटिटर उसको कॉपी ना करे. व्हाइल आई वाज वर्किंग विद हिलाल, ये होता था कि हमारी जो भी कैंडी सक्सेसफुल होती थी मार्केट में, फॉरनली उसका काउंटरफीट प्रोडक्ट आ जाता था, ठीक है? बट सिंस वी हैड आवर ब्रांड नेम्स रजिस्टर्ड, वी हैड कॉपीराइट्स, तो जाहिर है कि कोई इसको एज इट इज एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकता था, वरना उसको सू कर देते. लेकिन उन जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी कोशिश होती थी कि कुछ ऐसी फॉन्ट या कुछ ऐसी कलर में पैकेजिंग बनाएं कि एक नॉर्मल कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट में कोई वाज़ेह फर्क महसूस ना हो सके. सो वी हैड टू बी रियली on our toes all the time कि हमारे किस प्रोडक्ट को कौन काउंटरफीट कर रहा है, ताकि उसके खिलाफ हम कोई लीगल एक्शन ले सकें. अगर लीगल एक्शन, अगर आपकी ब्रांडिंग नहीं होती, आप कंपैटिटर्स के खिलाफ अपने ब्रांड एलिमेंट्स इस्तेमाल करने के लिए लीगल एक्शन नहीं ले सकते. सो एज सून एज यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ ब्रांडिंग, यू हैव टू साइड बाय साइड टेक केयर ऑफ your competitors to not copy the same logo, tagline, color, or font. And in this way, your own differentiation and identification will remain intact and distinct. All right. Now we are moving forward. That how is a brand different from a product? ठीक है, अब हम इस पे थोड़ा सा डिटेल में इस स्लाइड के
help से बात करेंगे. Product is anything, right? So it means that whatever you are bringing into the market after studying the needs of the customers and you're offering it for some money, you're charging a price for it, that can be termed as a product as long as it's not named, right? But as soon as you give it a name, as soon as you assign a logo or a tagline with it, which helps your customers in knowing and realizing that this product belongs to you and the other products belong to some other manufacturers, you have created a brand. Okay? Now, brands की एक perception marketers develop कर रहे होते हैं और वो जो perceptions होती हैं वो कुछ rational differences पर होती हैं और कुछ emotional differences पर होती हैं. Differences, for example, a small passenger car, right? That's a product category. A large passenger car, again, that's a product category. अगर हम उसमें बाकायदा brands के नाम ले तो हमें passenger cars में हमें Alto भी नजर आती है, ठीक है, और हमें सिटी भी नजर आती है. और रैशनल डिफरेंस इनमें क्या हो गया? रैशनल डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि डू दे बिलोंग टू प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है. व्हाट इज द इंजन कैपेसिटी, वो हमें पता चल गया. हाउ आर दे डिफरेंट इन साइज, वो हमें पता चल गया. हाउ आर दे डिफरेंट इन परफॉर्मेंस, ये हमें पता चल गया. हाउ आर दे डिफरेंट इन देयर फ्यूल इकोनॉमी, राइट? ये सारे डिफरेंसेस जो हैं इनको हम rational differences कहेंगे. But brands are something more than the rational differences, right? We say that we have created a brand when we are able to convince our customers that there are some emotional benefits, some symbolic benefits, some intangible differences that are there in our brand. मिसाल के तौर पर हम एप्पल फोन भी यूज कर सकते हैं, हम सैमसंग फोन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन जो एप्पल यूजर होगा उसके लिए एप्पल ब्रांड एक एक्सक्लूसिव, एक इनोवेटिव ब्रांड के तौर पे सामने आएगी, ठीक है. दैट इज नॉट द ब्रांड परसेप्शन व्हिच is upheld by Samsung, right? Similarly, अगर हम बात करते हैं लैपटॉप्स की हम बात करते हैं, ठीक है. अगेन सोनी हैज अ डिफरेंट सिंबॉलिक benefit, symbolic or intangible benefit as compared to Dell. So people would perceive Dell as a more functional brand of laptop, and they would think of Sony as being a more exclusive brand. शुरू में मैंने कहा था, मैं यहाँ पे I think it's better if I repeat that. Psychologically, we live in the world of brands, right? Whoever we are as a person, we try to portray our personality through our consumption practices, and we try to project ourselves, and we try to give others an impression about ourselves through the brands that we are using, right? So if you see a person, you would make your own judgment about that person by having a look at what type of a car he is driving, how is he dressing up, what brand of shoes that person is wearing, which mobile phone that person is carrying, which laptop is being used by that person. From the brands. Why? Because marketers want you to live their brands. They want you to make a statement about your own lifestyle with the help of the brands that they have created for you, right? So this is a truth that whatever consumption practices you have, the world around you makes its own assessment about yourself based on your consumption practices. Dear audience, I hope my voice is clear to you people. I would Yes. like
Yeah, I would like to invite a few comments regarding this philosophy of living your life through the brands, because if you people are able to, understand this concept, it will help me in taking you people to the next topic of our discussion. So any one of you would like to comment or give an idea or give their own understanding of how is it that we live through the brands? How do we project ourselves with the help of the brands? Any one of you? Um, okay, so what I understood is basically I'm not related to marketing or branding, but what I've understood after listening to you is that the way that we say कि oh मैं तो सिर्फ इसी brand के कपड़े पहनती हूँ, or that when we look at someone and they are wearing a particular watch or they have some particular brand's bag, तो we judge कि okay अच्छा इसने इसके पास इस brand का bag है तो इसका ये status है या something like that. So we in our day-to-day life we look at the people uh, based on the brands, and we also spend our lives through the brands कि हम तो सिर्फ इसी brand की चीज खाते हैं, हम तो local चीज नहीं खाते, so something like that. Yes, that is very true. You have captured the essence of what I was saying. We are living in a consumerist society, right? We are living in a consumption world. So whatever world we portray to others, it is through our consumption practices. How we see others, it is through the lens of consumption. ठीक है, मैंने ऐनक लगाई हुई है, लेकिन उस ऐनक की लेंस से ज्यादा शायद वो लेंस मैटर करती हैं जिसके जरिए मैं ये देखती हूँ कि दूसरा बंदा अपने आप को कैरी करने के लिए किन ब्रांड्स का सहारा ले रहा है. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी डिबेटेबल टॉपिक. It has its own ethical and moral concerns, but marketing, when we are looking at it from a consumerist point of view, yes, this is the success of brands, that they help in translating and deciphering the lifestyle uh, of the people. So many a times you tend to live the personality which the brand is trying to portray. जैसे हमने एप्पल की मिसाल ली, या अगर हम गाड़ियों में ऑडी की मिसाल लेते हैं या पोर्शे की मिसाल लेते हैं, ठीक है, तो वी हैव, या अगर मोटरसाइकिल्स में हम हार्ले डेविडसन की मिसाल लेते हैं. नाउ यू कैन नॉट इमेजिन अ पर्सन लाइक मी राइडिंग हार्ले डेविडसन. व्हाई? बिकॉज आप कहेंगे कि मेरी पर्सनालिटी और हार्ले डेविडसन की पर्सनालिटी में कोई मैच नहीं है, ठीक है. लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे सिटीज चलाते हुए देखते हैं, ठीक है, तो यू वुड से कि हाँ, इनका और सिटी की जो पर्सनालिटी है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर, दैट इज मैचिंग विद ईच अदर. सो मेनी टाइम्स वी टेंड टू कवर अप आवरसेल्व्स with the help of the brands that we use, and marketers help us in living our aspirations with the help of the symbolic benefits that they are building into the brands. मेरी अपनी PhD की जो dissertation है, it is about कि ये जो lowest economic segment होता है society का, वो smartphones क्यों खरीदता है, right? So in my thesis and my dissertation, I have talked about the reasons and the consequences of such purchases made by the lowest socioeconomic segment in Pakistan. So one of the main findings which came out over there was that they want to bridge the gap between the people who are poor and the people who are not poor. So by purchasing a product like a smartphone, and within that some brand which they can afford, they are trying to come closer to the people they aspire, to the people they would like to live their lives like. So that means we are into a world of brands, and they help us in living a life that we aspire. So marketers can be successful if they are able to build the symbolic, emotional, and intangible benefits into their brands, which help people in living a better life, right? For example, if it makes them more happy, it's all right if your brand has a symbolic
benefit, and by using it, the person feels that the person has acquired emotional well-being. It's all right. They can, on the other hand, we perceive that there can be fractional differences which become our priority, especially in times when we are facing financial crunch, when the economy is undergoing a downturn, right? And yes, you are right when you say that products and the brands reflect the quality as well. तो जितना वेल नोन ब्रांड होगी, उसका एक क्वालिटी प्रॉमिस होगा जो वो डिलीवर करेगी, और अगर वो डिलीवर नहीं करती तो उसकी ब्रांड की परसेप्शन, उसकी ब्रांड का जो इमेज है कस्टमर्स के माइंड में, वो जाहिर है कि हर्ट होगा, डिटीरियरेट हो जाएगा. All right, now we are moving forward, and yeah, all right. So this brings me to this point कि what makes a brand a brand, यानी एक प्रोडक्ट को ब्रांड में तब्दील करने के लिए क्या सिर्फ उसका लोगो, क्या सिर्फ उसका नाम, क्या सिर्फ उसकी टैगलाइन जरूरी है? So the answer is no. You need to have some psychological, intangible, positive images that you associate with the brand, which help you in distinguishing the different brands in the same product category. इंसान के जहन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है. अगर आप मिसाल के तौर पे टूथपेस्ट का ही प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में सोचें, there can be number of brands that you can recall. और मैंने कुछ महीनों पहले पढ़ा था कि within Pakistan there are more than 200 brands of toothpaste which are available in the market. ठीक है, तो मुझे तो 200 brands के नाम नहीं याद, and I'm sure कि आप में से भी किसी को 200 के 200 नाम नहीं याद होंगे. लेकिन इसके बावजूद जो ब्रांड्स टॉप ऑफ द माइंड हमारे जहन में आएंगी, सबसे आसानी से जिनको हम रिकॉल करेंगे, उसका कोई ऐसा एडवांटेज जरूर हमारे जहन में बैठा होगा जिसकी वजह से हम जब भी टूथपेस्ट जैसा एक रेगुलर यूज का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हम कोई सा भी टूथपेस्ट परचेज नहीं करेंगे, बल्कि हम स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लेकर दुकानदार से उस ब्रांड को तलब करेंगे, उस ब्रांड को परचेज करेंगे. सो अगेन आई रिपीट what I have said before, a brand is not just the name or a tagline or a logo, but it is the whole set of associations in the form of symbolic and intangible perceptions which make up a brand. अगर आप उन associations को brand से अलग करते, brand नहीं रहेगी. ठीक है, Marlboro cigarette, अगर आप उसमें से वो मैन इमेज रिमूव करते हैं, ठीक है, और आप उसमें से जिस तरह से मार्लब्रो लिखा जाता है वो फॉन्ट भी हटा दें, ठीक है, और आप मार्लब्रो को एक बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए हेल्दी प्रोडक्ट के तौर पर सामने लाएं, तो दैट ब्रांड विल नॉट रिमेन अ ब्रांड. इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड ऑफ सिगरेट्स, राइट? बट इफ यू de-link the associations with the brand itself, brand will cease to exist. You will cause the brand to die. तो एक मार्केटर का काम क्या होता है? पहली बात ये कि कस्टमर नीड्स को देखते हुए वैल्यू ऑफरिंग बनाए, उसको फिर ब्रांड में कन्वर्ट करे. ब्रांड में कन्वर्ट करने की सक्सेस को आप किस तरह से गेज करेंगे, किस तरह से रेट करेंगे कि आपका वो आपकी जो ब्रांड है वो कंज्यूमर्स के माइंड में एक वाज़े जगह ऑक्यूपाई करे, ताकि जब भी उस प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई परचेस करना हो तो दैट पर्सन recalls your brand and goes to the market with this specific objective of purchasing that particular brand rather than anything else. All right, now I am moving on to the next slide, which are what are the benefits of a brand. ठीक है, हम सब customers हैं, हम customers के point of view से बहुत आसानी से realize कर सकते हैं कि अगर किसी ब्रांड का नाम हमारे जहन में है, उसकी पॉजिटिव इमेज हमारे जहन में है, तो हम
प्रोडक्ट के खरीदने में इतना टाइम नहीं लगाते। टूथपेस्ट की मैंने आपको मिसाल दी, ठीक है। नाउ माय गिविंग यू माय ओन एग्जांपल, माय प्रेफर्ड एग्जांपल, sorry, my preferred brand within toothpastes is Colgate, right? So when I enter into a superstore and I go to the aisle where there are many different brands of toothpaste, I just select Colgate and take it to the counter. I do not spend a lot of time in seeing what brands are there and then comparing one another, because Colgate has a distinct image in my mind. I go by that perception and I purchase Colgate within a very short frame of time, right? So since Colgate has established its brand well, it helps me in completing my shopping in a smaller slot of time. यानी ब्रांड ने मेरा टाइम बचाया, ठीक है। ब्रांड ने किस तरह से मेरा टाइम बचाया कि मुझे विद इन दैट प्रोडक्ट कैटेगरी क्या ब्रांड खरीदनी है, मुझे कंपैरिजन में टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So it saves my time. The second point that is written over here is what I have explained to you in detail only, that we as customers speak in the language of brands and we project ourselves through the brands that we use. We use it to reflect our lifestyle, our personality, our education, our social standing, our occupation, so on and so forth. Okay? All right. Now, from the point of view of marketer, brand का फायदा क्या सिर्फ कस्टमर्स को होता है या ब्रांडिंग का फायदा जो है वो मार्केटर्स को भी होता है? तो यकीनन ब्रांडिंग का फायदा जो है वो कंपनीज को भी होता है, मार्केटर्स का भी होता है. Why? Because now they are able to concentrate their efforts with a certain degree of you can say confidence that their marketing efforts are going to be सक्सेसफुल, राइट? क्यों? इसलिए कि उनका सारा मार्केटिंग एफर्ट जो है, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो किसी ब्रांड नेम के साथ एसोसिएटेड है. आप इसकी मिसाल इस तरह से लीजिए कि अगर टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो अपने आप को एडवर्टाइज करना चाह रहा है लेकिन उसने अपने प्रोडक्ट को नाम ही नहीं दिया, तो वो कितना भी एफर्ट कर ले एडवर्टाइज करने के लिए, उसका एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर के पास कोई नाम ही नहीं है जिसके जरिए वो उस टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर की ब्रांड को रिकॉल कर सके, राइट? सो कंपनी identifies its product and then it is able to direct its entire marketing effort on that particular brand, and then it can determine what are the returns on marketing investment for that brand itself. ठीक है? ऑलराइट. दूसरा फायदा क्या होता है ब्रांडिंग का, कि हमने जो शुरू में मार्केटिंग की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि the end purpose of marketing is to create long-term profitable relationships with the customers. ठीक है? वो long-term profitable relationship कहाँ से आएंगे? अगर कस्टमर आपकी ब्रांड को पहचानता है, जब भी तो वो बार बार वापस आएगा आपकी ब्रांड को परचेज करने के लिए. अगर आपने अपनी ब्रांड की कोई पहचान क्रिएट नहीं की, तो कस्टमर को क्या पता चल रहा है कि वो पूनम की दालें ले रहा है, ठीक है, या कोई और दाल ले रहा है? उसको तो उसने क्या चीज उठाई है मार्केट से? दाल. अगर इम्तियाज सुपरमार्केट जिसकी अपनी इन हाउस ब्रांड पूनम के नाम से, वो उस पर कितना भी एडवर्टाइज करे, कस्टमर तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचेगा और वो कभी भी दोबारा उसी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा जिसको उसने पहले परचेज किया था. सो इफ यू आर टॉकिंग in terms of developing a long-term relationship with your customers, it becomes very, very necessary, very, very important that you create a brand out of your product. Otherwise, there is no point, no logic in promoting the product that you have created. I hope I'm clear. Any questions? Any comments? Should I move forward?
All right. All right. Now this brings us to the next question, that what can be branded? Now, the simplest answer to it is that everything on earth can be branded, right? Be it an occasion, be it a place, be it a personality, be it a philosophy, be it a sport, each and everything can be branded. And if you just look around yourself, you would know that you are actually witnessing brands. कराची का एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल होता है कराची ईट के नाम से. It is branded. You can know when the event is going to happen, right? ये जो अक्टूबर का महीना गुजर रहा है, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है. So as soon as you see the pink ribbon, you know what is being branded, what philosophy, what efforts are being branded, right? Fairy meadows, Pakistan mein tourism industry mein Fairy meadows is a very well-known destination. So even a destination like that is being branded. इसी तरह से Premier Leagues, they are branding cricket. Abdul Sattar Eidi is a brand in himself, despite not being in this world anymore, but the legend of Eidi Saab lives on. So the brand that was created is still living despite the fact that the person is no more in the world, right? So this is the power of the brands. The ideas can be branded. Everything that you can think of on this earth can be branded successfully. And the reason behind branding is that you are bringing that benefit enveloped in that brand to better meet the needs of the consumers. All right, now this brings us to a very important question, which is, what is brand knowledge and what is brand equity, and how does brand knowledge create brand equity? This last half an hour of our session is dedicated to these two important points. The first one is what is shown to the screen in front of you right now, that the relationship between brand knowledge and brand equity. And the second part to this is how can you align your marketing strategy for successful brand positioning. So moving forward from here. All right. Keller is a very well-known name in strategic brand management. And similarly, Al Rais is a very famous name in brand positioning. Al Rais expired, I think, a week or so, or 10 days before. And he has written a very interesting book, The Battle of Minds. He has written about brand positioning. So Al Rais says that the power of the brand lies in what customers have heard, learned, felt, or seen about the brand. So it means that whatever their five senses have experienced about the brand, that becomes a part of the memory of that customer. And that experience, that memorable experience, is what is creating a perception about the brand, whether it was of good quality or bad quality, whether it met your expectations or whether it fell below your expectations. That experience that you have had it as a brand, it resides in the mind of the customer and creates an image about the entire brand, right? So it means that whatever you are doing in order to make your brand successful, you have to make sure about one thing, that the brand is associated with a meaningful, positive experience, right? All right, now when we turn to marketing metrics, right, what are the objective measures which can measure the strength of how successful your branding has been? So one main tool that we have in our hands is about the brand equity, right? Brand equity means that it is the added value to the marketing efforts
which means that if your customer does not have any brand knowledge, right, and you are creating a marketing effort in the form of 4Ps, यानी आपके कस्टमर के पास कोई ब्रांड नॉलेज नहीं है, वो आपकी ब्रांड के बारे में नहीं जानता, ठीक है, आपने अपनी ब्रांड के लिए पूरा मार्केटिंग एफर्ट यानी 4Ps जो है वो डिवाइस किए हैं, और वो आपने टारगेट किए कस्टमर के ऊपर, और आपने मेजर किया कि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। फिर आपने दूसरे इसी एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से में आपने क्या किया कि आपने अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाया, अपने प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करवाया। जब आपकी ब्रांड फेमिलियर हो गई कस्टमर के लिए, और फिर आपने अपने मार्केटिंग एफर्ट पे काम किया, तो फिर आपने दोबारा उस कस्टमर का रिस्पॉन्स मेजर किया, और इन दोनों रिस्पॉन्सेस में जो डिफरेंस आएगा वो सिंपली ब्रांड इक्विटी कहलाएगा। अगर इसकी मैं आपको एक मिसाल के तौर से ज्यादा बेहतर समझाने की बात करती हूँ, ठीक है। Okay, while I was working with Diwan, it was the second time that in Pakistan's market, Hyundai vehicles were launched, right? This is somewhere in 1998 or early 2000 की मैं बात कर रही हूँ, right? अच्छा, उससे पहले पाकिस्तानी मार्केट में जो गाड़ियों के ब्रांड नेम्स लोग जिनसे फेमिलियर थे वो सुजुकी, Honda or Toyota. These were the locally assembled brands and people were aware of these brands. ठीक है। इसके बाद जब मिसाल के तौर पर Santro इंट्रोड्यूस हुई, which is a सब ब्रांड ऑफ Hyundai, तो लोगों के पास कोई नॉलेज एज सच नहीं था। अगर उस वक्त मार्केटिंग एफर्ट करते, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल हैव रिस्पोंडेड टू Santro, हाउ मेनी पीपल हैव इंक्वायर्ड अबाउट Santro, हाउ मेनी पीपल हैव बुक्ड ए Santro, तो वो एक रिस्पॉन्स हमारे पास आता, ठीक है। उसके बाद हमने Santro की ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजिंग शुरू की, टीवी पे भी एडवर्टाइज किया, प्रिंट मीडिया में भी एडवर्टाइज किया, एक जमाने में रेडियो पे भी एडवर्टाइज किया था। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को ब्रांड के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि दिस इज अ कोरियन ब्रांड, और इसकी गाड़ियों की क्वालिटी ये होती है और इसके फीचर्स ये हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने डेडिकेटेड मार्केटिंग एफर्ट किया, तो कंज्यूमर रिस्पॉन्स इस तरह से सामने आया कि द नंबर ऑफ vehicles booked for Santro, the number increased, ठीक है। अब जो पहला, the first number of booking and the second level of booking, इन दोनों में जो difference था, that was caused by the brand knowledge which the customers had acquired about Santro in the meantime, right? तो जब आप उस कस्टमर रिस्पॉन्स में जो चेंज आ रही है वो उस ब्रांड नॉलेज से के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप कहते हैं कि आपकी ब्रांड इक्विटी मार्केट में इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई है। इन अदर वर्ड्स, इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब तक आपके कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में नॉलेज ना हो, आपका मार्केटिंग एफर्ट जो है वो डिजायर्ड कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। सो इट इज इम्पेरेटिव दैट योर इनिशियल एफर्ट should be on developing the brand knowledge amongst the customers. बजाय आपको ये चीजें बहुत टेक्निकल लग रही होंगी, हो सकता है बोरिंग भी लग रही हो, लेकिन मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लेकर आती हूँ, एंड आई होप दैट यू विल बी able to appreciate what brand equity is. Let me move on to the next slide. Okay, brand knowledge दो तरह से एक कस्टमर जो है ब्रांड नॉलेज एक्वायर करता है। या तो वो ब्रांड के बारे में अवेयरनेस हासिल करता है, या उसके जहन में ब्रांड इमेज बनना शुरू होती है, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब है कि एक कस्टमर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपकी ब्रांड को आइडेंटिफाई भी करता है और आपकी ब्रांड को याद भी रखता है। किस तरह से, लेट मी शो यू। आई हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ब्रांड रिकग्निशन क्या है, मैंने आपको
HP का एक लैपटॉप दिखाया और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हैव यू बीन एक्सपोज्ड टू दिस ब्रांड बिफोर, व्हिच मींस कि ये जो HP लिखा हुआ नजर आ रहा है, डज इट क्लिक, does it make you realize that it's a particular brand, Hewlett Packard, that you are seeing, and this is a particular brand in of laptops? If you're able to recognize the logo, if you're able to recognize this image and color, it means that you have been exposed to this brand before, you have seen this brand before. ठीक है, this is brand recognition. यानी मैं आपको लोगो दिखाती हूँ और आप मुझे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ ये ब्रांड आप इससे फेमिलियर है. ठीक है, ब्रांड रिकॉल का क्या मतलब होता है कि मैं आपको एक प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाती हूँ और आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जो ब्रांड्स हैं उनको अपनी याददाश्त के सहारे से रिकॉल करना शुरू करते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट इमेज शोइंग यू? दैट आई हैव शोन यू अ लैपटॉप, इसका ब्रांड नेम नहीं नजर आ रहा और मैं आपसे कहती हूँ कि व्हाट ब्रांड्स ऑफ दिस प्रोडक्ट क्लास कैन यू रिकॉल, यानी लैपटॉप की प्रोडक्ट कैटेगरी में आप कौन सी ब्रांड्स रिकॉल कर सकते हैं. तो हो सकता है आप कहें डेल, हो सकता है आप कहें HP, हो सकता है आप कहें फ्यूजिट्सु, हो सकता है कि आप कहें सोनी. सो ऑल दीज ब्रांड्स यू आर एबल टू रिकॉल. व्हाई? बिकॉज यू हैव बीन exposed to these brands, you remember them, and you are able to recall them in within the specific product category. ठीक है, तो ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब है? ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि या तो आप ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं या आप विद इन अ पर्टिकुलर ब्रांड कैटेगरी उस ब्रांड के नाम को या उसके लोगो को या उसकी टैगलाइन को रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो ब्रांड नॉलेज का एक कंपोनेंट क्या था? ब्रांड अवेयरनेस, यानी या तो आप ब्रांड रिकॉग्नाइज करें या आप उस ब्रांड को रिकॉल करें. मूविंग ऑन टू द ब्रांड इमेज, इट मींस कि व्हाट आर द perceptions, what are the attributes, what are the benefits that you think or you have experienced with that brand. और किस तरह से ये आपके नॉलेज का हिस्सा बनता है, किस तरह आपके जहन में आता है, वो तमाम इनिशियल मार्केटिंग एक्टिविटीज जो ब्रांड ने अपनी अवेयरनेस एस्टैब्लिश करने में की होती हैं. ठीक है, या अगर आपने उस ब्रांड को यूज किया है तो दैट बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस of creating an image about the brand in your minds. So for example, if I find Samsung more user friendly than Apple, then this is an image which I am carrying, which differentiates Samsung from Apple in my mind. Okay, then one of the ways in which you form a brand image is by listening to the people who have used those brands. So if someone is telling you that the new Hyundai passenger cars, Elantra and Sonata, they are very luxurious, they are very exclusive to drive, then you might not have, driven that car yourself, but because you have talked to others, you have listened to them, an image is built up in your mind. So these are different ways in which you gather brand awareness and brand image, and together they make the brand knowledge. रेफरिंग बैक टू ब्रांड इक्विटी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जहन में ब्रांड की इमेज है, ठीक है, और अगर आप ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और ब्रांड को रिकॉल कर सकते हैं, तो जब कंपनी अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग एफर्ट करेगी, तो जो डिफरेंशियल इफेक्ट आप एज अ कंज्यूमर शो करेंगे, that will be termed as the brand equity. The more positive response you show, right, the higher would be the brand equity. The low level of response you show, the lower will be the brand equity, right? So you have to remember this thing, that the prerequisite for establishing brand equity is the brand knowledge which customers have in the form of brand recognition, brand recall, and brand image. These are the three things which make up the brand knowledge. Any questions, my dear audience? कोई आप लोगों का सवाल है, कोई comments?
All right. So let me discuss with you very briefly. Body Shop is a brand of cosmetics, right? And let's see what is it, the global brand image which goes hand in hand with Body Shop. So जिन लोगों को एक्सपीरियंस है बॉडी शॉप को, वो पहली चीज ये रिकॉल करेंगे कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि नो एनिमल टेस्टिंग, राइट? यानी द प्रोडक्ट्स हैव नेवर बीन टेस्टेड फॉर on animals. Why? Because it's a very friendly, environmental friendly brand, and it does not want to subject animals to its product testing. So it's very clearly written over there that it is never tested on animals. The packaging is very simple, right? The staff is very enthusiastic. Then they have social action program which you can say which takes a lot of care about the CSR activities. So all this goes into building the brand image of Body Shop. Okay, moving forward from here. अच्छा, एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल आप कर सकते हैं कि ये सब तो समझ में आ गया कि भाई ब्रांड इक्विटी के लिए ब्रांड नॉलेज जरूरी है, ब्रांड अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन ये एसोसिएशंस मार्केटर बनाएगा कैसे? ठीक है, आप एक ब्रांड मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो हाउ वुड यू इंश्योर दैट the customer is able to perceive your brand as favorably as you as a marketer intend it to be? तो इसके लिए सबसे पहली बात ये कि आपने अपनी ब्रांड को अपने टारगेट ऑडियंस के साथ रेलेवेंट करार देना है। यानी रेलेवेंस का क्या मतलब है? Your brand is able to fulfill some exact set of needs which the customer has. So in that time of need, the customer thinks कि उस need को fulfill करने के लिए जो सबसे बेहतरीन ब्रांड है वो आपकी ब्रांड है. This is the relevance that you have to establish, right? The second thing is consistency. आप हमने जैसे रोलेक्स के मार्केटिंग मिक्स का एग्जांपल जब अभी सेशन के शुरू में डिस्कस किया था, सो व्हाट डिड वी से कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग मिक्स के बाकी एलिमेंट्स यानी प्राइस, प्लेस और प्रमोशन सब सिंक्रोनाइज्ड है. कोई भी एलिमेंट जो है वो कोई डाइवर्स आइडिया नहीं दे रहा. ठीक है, तो आपकी भी एसोसिएशन जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी ब्रांड की, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. अगर रोलेक्स की एसोसिएशन प्रीमियम वॉच की है तो हर मौके पे जब जब कस्टमर उसकी किसी कैंपेन को देखता है या वो एक्चुअल प्रोडक्ट को देखता है या किसी ऐसे बंदे को देखता है जिसने रोलेक्स पहना हो, तो उसको कहीं से भी डाइवर्जेंट व्यू नहीं मिलता, बल्कि हर चीज इस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है कि यस, रोलेक्स इज अ हाई एंड प्रीमियम वॉच. ठीक है, इसी तरह से जो एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स आप अपनी ब्रांड के साथ अटैच कर रहे होते हैं, दे हैव टू बी परसीव्ड एज फेवरेबल बाय द कस्टमर्स. ऐसा ना हो कि कोई चीज आपके नजदीक फेवरेबल हो लेकिन कस्टमर उसको फेवरेबली ना देख रहा हो. ठीक है, similarly, your uniqueness of association, unless and until your brand stands out amongst the competition, you will not be creating sufficient brand knowledge which will create brand equity. ये बात बहुत याद रखने की है. तो आपको uniqueness चाहिए, आपको differentiation चाहिए. How is your brand better than all the other brands which are available in a product category? You have to be very specific in answering this question. और अगर as a marketer आपके पास खुद इस बात का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि your brand does not have strong associations in the mind of customers. Moving forward, इस स्लाइड में मैंने आपके सामने यही देखा है कि वो कौन सी एसोसिएशंस हैं जो कस्टमर्स डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट के साथ एसोसिएट करते हैं. मिसाल के तौर पे जब जैसे आप कोलगेट का नाम या पैकेजिंग देखते हैं, राइट,
तो आपके जहन में फौरन ये आता है कि it is very effective in strengthening the teeth and freshening the breath. जब आप Crest को देखते हैं तो आपको लगता है कि yes, it is a very popular brand which is available worldwide, and उसका जो मेन डिफरेंशिएशन है वो ये है कि वो टारगेट प्रोटेक्शन करता है, और सेंसोडीन को जब आप रिकग्नाइज करते हैं मार्केट में, फौरन आपको ये ख्याल आता है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड मेडिकेटेड टूथपेस्ट टू एड्रेस द tooth sensitivity problems. Close-up very directly linked with the freshness of mouth. And Pepsodent is again a brand which is associated very closely with the plaque removal and strengthening the teeth enamel. So out of the 200 brands of toothpaste, as I said, they do exist in Pakistani market right now. Even these 5 brands, if you think of these examples, they have a very different set of associations connected with them. So the customer will go for Colgate for one reason, he will go for Sensodyne for another reason, he will go for Close-up for another reason. Why? Because of these benefits, because of these attributes, because of the associations which stand out and make these brands different from the existing brands in the market. I hope I'm clear to all of you. Okay, now you remember in the slide in which we had talked about market segmentation, targeting, and positioning. I had deliberately discussed targeting and segmentation in detail, but I was very, very brief about the positioning. So positioning can be best understood once you have had a background about what branding is. So now I'm moving back to positioning. So positioning means that your brand is occupying a very distinct place in the minds of the targeted customers. So your customer is able to associate what does your brand stand for, why is it different from the other available brands, how similar it is to the competing brands, but at the same time what makes it more preferable, right? And what are the reasons why a customer should purchase that particular brand when the usage occasion crops up. All right. So when we talk about brand positioning, we have to understand 2 things. What are the points of parity and what are the points of difference? Points of parity means how is a product, how is a brand similar to other brands within the same product category? And points of difference means what makes it stand out in that particular set of competition. All right, now I come to the last very important point, that what is the brand resonance model, which means that what are the different stages through which your brand moves. So if you look at this pyramid, the first stage is that you need to establish your brand in the minds of the customers with the help of category identification. They should remember that Kiwi is a shoe polish. They should remember that Close-up is a toothpaste, right? They should remember that, for example, Bata is a shoe. ये category identification है कि आपकी brand का नाम सुनकर आपका customer समझ जाए कि वो किस product category की बात कर रहा है, right? The next step is that with the help of your marketing activities, you are establishing an image about the performance of the brand and the intangible associations, yani rational and emotional, rational and symbolic benefits आपने अपनी marketing effort के जरिए customer के ज़हन में register करवाएं. Once these benefits are there, the customer starts using your brand. At that time of usage, the customer should be able to judge rationally what is the credibility of the claims that you have made about your brand. For example, is it good in quality? Is it superior in quality? And to what an extent are the emotional aspects of your brand fulfilling the expectations of the customer, right? Once this
is achieved, then you move on towards the apex of this pyramid, which is called the resonance, which means that now your customer has developed a very active involvement with your product, and this will lead to those long-term profitable relationships between the brand and the customer that we had talked about in the very beginning of this session. Now, okay. Now, the last point that I'll be spending these last 10 minutes is about how should we integrate the marketing strategy with branding strategy. Yani, what do we need to do with those 4 P's, with those 4 key marketing elements which help us in establishing our brand very successfully in the market. अगर आपको ये pyramid आपके ज़हन में है जो मैंने अभी आपके साथ discuss किया था, तो now we are going to now we are going to match how the pyramid that you have just studied about the brand resonance, how those different stages are to be achieved with the help of your marketing program. ठीक है, येलो पिरामिड वही है ब्रांड रेजोनेंस का जो अभी आपने एक स्लाइड पहले आपने देखा, मैं एक्सप्लेन करी थी. सबसे बॉटम पर है इस पिरामिड में, the objective is to create deep and brand awareness, right? So you have to check how well your ad campaign is contributing towards creating brand awareness. ठीक है, brand awareness के again 2 components थे कि क्या आपकी campaign जो है वो brand recognition और brand recall improve कर रही है या नहीं कर रही है. अगर आप इस step पर market research करके देखते हैं, आपको अपनी campaign की success का पता चल जाएगा कि if it is resulting in deep and broad brand awareness, yes, you have achieved your marketing strategies target. Moving forward, आपने क्या करना था, अपनी ब्रांड के लिए पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्रिएट करने थे, जिसकी बुनियाद पर कस्टमर कन्विंस होता है कि अमंगस्ट ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड सब्स्टिट्यूट्स योर परचेज इज द वन ही इज और शी इज गोइंग टू बाय. उस स्टेज पे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इज द कैंपेन क्रिएटिंग, मेंटेनिंग और स्ट्रेंथनिंग द ब्रांड एसोसिएशंस, राइट? क्या कस्टमर के जहन में फेवरेबल ब्रांड जजमेंट्स क्रिएट हो रही हैं या नहीं? Again, you can do a research at this, and if you see that yes, a customer is able to identify points of parity and points of differences between the different brands, and those associations are resulting in some observable, positive, accessible reactions, yes, you have met the second objective of your marketing strategy, right? And moving on, if you want to create an intense, active loyalty with the brand for your customers, then you have to see that to what extent do all promotions encourage customers to purchase more of your brand even at a premium price. हर स्टेज के लिए आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, उसको गेज करने का तरीका अलग है. You have to synchronize and align the two so that whatever your marketing efforts are going on, you are creating brand awareness, brand recall and intense brand loyalty simultaneously. क्योंकि अगर आपका ये green pyramid जो है इसके ऊपर question रह जाते हैं, तो आपका ये complete नहीं हो पाएगा, and your brand, despite having the name, will not be recognizable in the market, and your marketing efforts will not be helping in creating a larger customer base for your product. So the marketing end objective क्या था? Long term profitable relationship, वो link break कर जाएगा, and your marketing efforts will not be giving you any return. So you have to keep these two very well synchronized together. Okay, so just a recap of what we have done so far in today's session. I hope you found it a fruitful session. Just a recall, we started from a review of marketing and branding, then we discussed the marketing mix,
We had an overview of market segmentation, targeting. Then we talked about how a brand is different from a product. Then we learned about the brand elements which create the identity and the differentiation for a brand. Then we learned about how brands are positioned. We learned about the pyramid, the brand resonance model, which was the brand strategy. We talked about brand equity, and in the last, we discussed what was the role of marketing strategy in creating strong brands. Now, a very valid question that you should be asking yourself right now is that you have spent 2 hours with me and you have hopefully listened and absorbed all that I recapped for you. How can you apply this knowledge, right? So as one of the trainers, as one of the people who are associated with teaching marketing, I can say this for you, that you can design your own marketing mix. You can identify how a market can be segmented. You can identify your target market. You can assess if your branding strategy is aligned with the intended brand positioning, and you can evaluate if brand knowledge is sufficient to create strong brand equity. So this brings me to the close of this session. I thank you all very much for your participation, for your interest, for your patience in listening to me for these 2 hours. And if you have any questions, you're more than welcome to put them across to me right now. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Ma'am, first of all, thank you so much. Very very interesting. आपने बहुत ही अच्छे से नॉलेज की है, बहुत ही अच्छा लगा है. और सेकंड ये है कि मेरे क्वेश्चन है इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केटिंग मिक्स के ऊपर, ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा आप मुझे ये बता दें, जैसे हमारी प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस, ठीक है, प्रमोशन. तो प्रोडक्ट भी समझ में आता है, प्राइस भी ठीक है, आप जो भी वो कर रहे हैं वो भी समझ में आता है, लेकिन प्रमोशन हमें किस तरीके से इसको, अब जैसे कि सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम एक बेटर वे से हम कैसे से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को. आपका सवाल ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, राइट? जी जी जी. ओके, लेकिन प्रमोशन में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इट इज जस्ट द एडवर्टाइजिंग, राइट? लेकिन प्रमोशन मिक्स के अपने एलिमेंट्स हैं. उसमें एडवर्टाइजिंग भी आ जाता है, उसमें पब्लिक रिलेशनिंग भी आ सकता है, उसमें पब्लिसिटी भी आ जाता है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग भी आ जाता है. सो एक्चुअली which element you are going to focus when depends upon what product you are trying to market. हमने रोलेक्स का एग्जांपल दिया, ठीक है. रोलेक्स के लिए आप किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं? आप टीवी पे तो एडवर्टाइज नहीं करेंगे रोलेक्स को, राइट? हमने ये कहा कि बड़ी स्पेसिफिक अप क्लास हाई एंड स्पोर्ट्स को रोलेक्स जो है वो केटर कर रहा होता है. जबकि अगर आप टैंग जो ब्रांड है, टैंग का प्रमोशन देखें, आपको कहाँ का नजर आएगा टैंग का प्रमोशन? टैंक जो ड्रिंक है, ठीक है, उसका प्रमोशन आपको कहाँ उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे नजर आती है आपको? या एवरीवेयर. टैंक अगर हम देखें तो हेलो सॉरी, आपको टीवी पे नजर आएगी, आपको अखबारों में नजर आएगी, आपको उसके बिलबोर्ड्स नजर आएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ your promotion strategy depends upon your product, which medium you are going to select for promotion, and what are the media habits of your target audience. It determines what promotion strategy you should be having. We have another comment over here. How can a service be promoted through social media? The very very interesting question. Okay, service is something which is intangible, right? You need to experience it. और सोशल मीडिया जो है उसकी बड़ी यूबिक्विटस प्रेजेंस है, यानी आप हर आदमी जो है वो एक सोशल मीडिया पर हमको एक्टिव नजर आ रहा होता है. आप सर्विस को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी रेलेवेंस की. आप
आपकी सर्विस किस टारगेट मार्केट से रेलेवेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे फुट मसाज के लिए हमनूर की सर्विसेज यूज करनी है, हमनूर मुझे किस तरह से अपना मैसेज प्रमोट करेगा, ठीक है। उसको क्या देखना पड़ेगा कि अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो what are the type of activities that I am doing on social media? Am I browsing for foot massage services? Am I looking for example, health and lifestyle columns or blogs? वहीं पर जब उसके पास मेरा वेब प्रिंट आ जाएगा तो it will be able to use that particular mode for giving me a customized message. तो services में for example फुट मसाज का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इसी तरह से अगर आप एयरलाइन सर्विसेज की बात करें तो yes they are also on to social media। ये ब्लू एयर जो है ये फेसबुक पे अपने डेज सेलिब्रेट करता है। it asks its customers to take a pic of yourself or your family while you are boarding or in board Blue Air, and then those pics are entered into a competition, and the best pic gets an award in the form of a free ticket also. So this is another method of advertising a service through social media. I hope I have answered you sufficiently. Hello. Yeah, ma'am. Hello. Yes, I can hear you. यस मैम, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, इस वजह से समझ नहीं आ रही बात की। थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर लें इसी जो आपने लास्ट में बोला है। All right, मैं आपको ब्लू का एग्जांपल दे रही थी। Can you hear me now? आपको मेरी आवाज अब आ रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? जी, अब क्लियर है। ठीक है। मैं आपने मुझसे पूछा था कि सर्विस को सोशल मीडिया पे किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें एयरब्लू की मिसाल दे रही थी। एयरब्लू अपने कस्टमर्स को इनकरेज करता है कि वो जब एयरब्लू ऑन बोर्ड हो तो वो अपनी कोई या अपनी फैमिली के साथ कोई पिक्चर लें। उन पिक्चर्स को वो एक कंपटीशन में एंटर करते हैं और बेस्ट पिक्चर को वो अवार्ड देते हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ फ्री और अ डिस्काउंटेड एयर टिकट। So this is how they are promoting their airline service on social media, Facebook page पे। The social media जिसके पीछे जाहिर है डिजिटल टेक्नोलॉजी है, it helps you in reaching out to the precise customer with a very precise marketing program. इस वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते मैं आपको मार्स का एग्जांपल दूं। मार्स द चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया जिसका नाम उन्होंने हंगरिदम रखा, ठीक है। वो एल्गोरिदम, अच्छा, इस एल्गोरिदम बनाने के पीछे क्या स्टोरी थी? उनकी एक रिसर्च थी जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि the more hungry a person is, the more aggressive that person becomes. जैसे जैसे इंसान को भूख लगना शुरू होती है, ठीक है, उसका एग्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है। उनकी फाइंडिंग, रिसर्च में ये फाइंडिंग दी तो उन्होंने एक एल्गोरिदम डेवलप किया। उस एल्गोरिदम में क्या करा था कि फॉर एग्जांपल अगर वो आपके फोन पर आप अपने फोन पे चैट कर रहे हैं और आपकी उस चैट से एल्गोरिदम जो है वो आपका लेवल ऑफ हंगर डिटेक्ट करेगा और आपकी लेवल ऑफ एग्रेशन डिटेक्ट करेगा और उसको वो यूज करेगा हाईली कस्टमाइज्ड डिस्काउंट देने में। इस एल्गोरिदम का नाम मार्स ने एल्गोरिदम रखा। तो मिसाल के तौर पे मैं और आप एक ही जगह बैठे हैं, ठीक है, एंड आई एम फीलिंग मोर हंग्री देन यू, तो जो मेरी स्क्रीन पे मार्स का डिस्काउंट नजर आ रहा होगा वो उससे ज्यादा होगा जो आपके लिए नजर आ रहा होगा, ऑल्दो वी आर सिटिंग एट द सेम प्लेस। So this is the extent of how technology is using social media to provide very customized offerings to the customers. Yeah, ma'am. You are clearly. Hello. जी। हाँ मैम, मुझे बेहतर तरीके से समझ आ गई। थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे से समझा दिया ये।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे फर्दर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को फिर भी हम अवेलेबल होंगे। ठीक है मैम? Thank you so much. thank you Have a so much. very nice weekend. अल्लाह ताला आप सबको अपने अमल में रखे, और Yes. इंशाल्लाह जो आज आपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग सुना है, I hope it helps you in your lives, in your professional lives, and you are able to apply this knowledge in your work life as well. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz. And I would like to thank Aspire, especially Mukim Saab, for giving me an opportunity to speak on this forum. Thank you, sir. Thank you very much.